Hello everyone, this is me Salma Kusar and you are watching EZShifa. आप सोचते तो होंगे कि EZShifa है क्या और ये किस तरह से काम करता है। हम EZShifa के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ आते हैं, बहुत से टॉपिक्स पे बात होती है, कभी बीमारियों पर बात होती है, कभी उनके इलाज की बात होती है, कभी टेस्ट से रिलेटेड बात करते हैं। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि EZShifa क्या है, इसके और कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं और ये काम किस तरह करता है। बात करने के लिए हमारे साथ आज हमारे बहुत खास मेहमान अदनान सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने आज वक्त दिया हमें। और आपका ये कॉन्सेप्ट था, बहुत सारी और भी चीज़ें। पहले आप अपना थोड़ा सा प्रोफाइल बता दें, बैकग्राउंड बता दें, उसके बाद हम आगे डिस्कशन को लेके चलते हैं। Sure. Well, first, thank you very much. I really appreciate the invitation. I think it's an honor to be here. मेरा अपना जर्नी है कि मैंने NED से ग्रेजुएशन की थी 80s में, and after my graduation I went to States. I did my master's and an MBA. I worked for Hewlett Packard for about 20 years. When I left HP, I was a senior director of R&D, and then I joined Amazon Robotics. I was managing their robotics group. Warehouse automation was my thing. I think like 17, 18 May, I decided to leave Amazon and come back. I started my own startups. I invested in a few, I started advising a few, and then I started a non-profit organization called the Startup Council. I was helping younger people start their own organizations. And in the midst of all that, I came across EZShifa, and I felt like that was my calling. So here I am. ग्रेट। अच्छा, अमेरिका जैसे मुल्क में लोग रहना भी चाहते हैं, इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, वहाँ से अच्छी अर्निंग भी हो सकती है, फिर आपने उस कंट्री को छोड़ के पाकिस्तान का इंतखाब किया और फिर हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट किया। एनी रीज़न? यार, उसकी कई वजूहात हैं। I think one is that even you can leave. I left in 80s, so it was almost 40 years, 38, 39 years I've been out of the country. But you are always attached to your homeland, right? Always. Even some of the people try to cut the ties and now I'm an American, but the world reminds you every day, hey, your roots are there. And so everybody that I know in the States, they are almost always looking back to Pakistan and see what I can do to help. And that is the journey that I was on. होता ये है कि when you try to work on those things and you find people on the way that they have a need, and that becomes sort of your calling. So when I was working on the startups, I came across some paper that about 150 million people in Pakistan don't have access to primary health care. And I thought that was my calling. And so based on that, I decided to leave and come back here and see what I can do to change the system. So 150 million people, those who don't have access to primary health care, I think in the next 10 years we can change that and everybody will have access to health care. We are hopeful. Okay, EZShifa क्या है? EZShifa को अगर मैं कहूँ कि आप शॉर्टली बता दें कि ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये काम कैसे करता है, कोई भी आम आदमी से कैसे फ़ायदा उठा सकता है? So just I was saying earlier, right, that about 150 million people in Pakistan don't have access to healthcare. So I'm a technologist. I worked for Hewlett Packard for 20 years, and I was a senior director of R&D. So technology, I normally use this phrase, that technology जो है वो घर की लौंडी है. Don't worry about it. We got it under control, and we will deliver it. Healthcare की जो problem है वो हम technology solve करेंगे. So technology is going to bring the answer. So with that in mind, we are shifting the paradigm. कि अभी तो ये होता है कि जब किसी की तबीयत खराब होती है, so they go to healthcare, right? We are changing all that. We are saying no, we will bring the healthcare to you. तो हमने जो concept develop किया है टेली हेल्थ का, now nobody will have to walk more than 2 blocks to get to healthcare. So nobody has to drive for 6 hours from village or on a cart पे डाल के या मंजी पे डाल के you're going, miles and miles to get to healthcare. Now, we will bring the healthcare to you, and that's how it will solve the problem. Okay, और एक और प्रोजेक्ट भी है आपका, अपना डॉक्टर. What is it? अपना डॉक्टर किस तरह से काम करता है? Right. So अपना डॉक्टर जो है, so let me step back a little bit.
there are lots of people working in telehealth. So telehealth के आपने डॉक्टर से वीडियो पे कॉन्फ्रेंसिंग कर ली, अपने symptoms बता दिए, whatever. But that whole technology space is limited to people, those who have access to smartphones, internet, desktop and all that. Pakistan में we can argue कि वो population जो है is 20%, 25%, 30%, but it's still at the very top people have access to that, right? We नीचे के जो 60, 70, 80% लोग हैं, technology is missing them totally, right? So अगर आपके पास smartphone नहीं है, so you are deprived of all this technology. तो हमने क्या किया कि हमने उस technology को एक kiosk में convert करके we brought that kiosk to you. So people at the bottom of the pyramid, right, we have given them the technology. So just to build on that, I'm going to give you a little longer answer, so forgive me for that. Sure. There are 3 problems in healthcare, not in Pakistan. Actually, this is not a Pakistan problem. This is a humanitarian problem. People don't have access to healthcare, right? Second one is, if you have access, can you afford it? Affordability is a major issue. Third one is, there is hardly any accountability or quality in healthcare. So accessibility is an issue. If you have the accessibility, affordability is an issue. And if you have accessibility and quality, then the quality is a major concern. So these are the major problems that we are solving through APNAA Doctor Kiosk. जी, अच्छा, अभी इजी शिफा की हम बात करते हैं तो वो तो एक ऐप है, फिर कियोस्क की ज़रूरत क्यों पेश आई? मतलब इसमें क्या डिफरेंस था, आपने ऐसा क्यों सोचा इस साइड पे आने का? Right. So as I said earlier, right, app जो है is for people, rich people like you, right? Those who have smartphones, those who have internet, those who have computers. So the guy who is working in my house fixing the lawn, he doesn't have or she doesn't have a smartphone. So how do we get to them? The only way to get to them is through kiosk. तो हमने उसको डब्बे में डाल के इस पूरी टेक्नोलॉजी को we bundled it and we took it to the villages and putting it out there. So उसके advantages क्या हैं? उसके advantages क्या हैं? कि now one, they don't have to come to us, right? So we are taking healthcare to them. Second part is we are integrating all the technology into it, and we'll discuss that more in detail. The third one is people are getting the job. Somebody, whoever is, or we are deliberately, what we are trying to do is we are trying to dummify the kiosk. So you don't have to have a college degree or 4 years of education or doctor's degree or whatever. If you know how to run an Android, we can train you in 1 week and you can own the kiosk and you can make a decent living. And it's like more of an Uber model. All right. So instead of purchasing a taxi for 50 million, or sorry, 15 lakh ki, right? You can buy our kiosk for 3 lakh ka, and you can make the same, you can earn the same amount of money or better and provide healthcare, less risk. Actually, that's our punchline too. ग्रेट, मतलब आपने ये भी बता दिया कि ये काम किस तरह से करते हैं. अच्छा, विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी आप काम कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी खवातीन को जॉब्स भी मिल रही हैं. इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि आपका जो अपना डॉक्टर कियोस्क है ये विमेन एम्पावरमेंट के लिए किस तरह से काम करता है, विमेन एम्प्लॉयमेंट के लिए किस तरह से काम करता है, और वो खवातीन जो कम पढ़ी लिखी हैं वो इससे कैसे फ़ायदा उठा सकती हैं? Actually, my personal vision is that when we are making these kiosks, we are selling it to people like Uber, right? You can buy a kiosk and make a living out of that thing. You can open your own digital clinic. I really would like 50% of these kiosks to be owned by females, right? उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि not trying to be chauvinistic here, but villages वगैरह में क्या होता है कि they try to get the boys educated, but not the girls educated. So we are trying to take the kiosk technology to that level that the girls can learn how to operate it. Achha, now once they know how to operate it, they can own it, they can make a decent living. Studies have shown the girls, those who have their own businesses in villages or rural areas, they get married early and they get married up. So we are making a huge difference. That's one aspect of it. The second aspect of that is, in the healthcare system, if there's a male anywhere in the system,
the women don't talk about their feminine issues. They will come and they see a man sitting there, they clamp up, they don't talk, they go back. True. So our vision is that a girl should own the kiosk, the patient is a kiosk, the patient is a woman, the doctor is a female. So there is no male. Now they can have open discussion about their feminine issues and all that. Is there any degree criteria for women? I'm sorry? Is there any degree criteria if somebody wants to join kiosk? No, we are actually very deliberately trying to make it as simple as possible. So with the lowest denomination, least amount of education, just a little bit of awareness, you should be able to own and run the kiosk. That's the whole, I mean, we are doing that on purpose. Not that we don't trust, I mean, there are lots of intelligent women, and I admire most of the women in my life, those who are very, very intelligent. I look up to them. But the reality is that most of the girls in our villages, they're not highly educated. True. So we are dumbifying, not that dumbifying is not the right word, but simplifying the kiosk so they can own it and operate it and run it. अच्छा, आपका एक और प्रोजेक्ट भी है, हवा. वो क्या है, वो किस तरह से काम करता है? So, I mean, I'm not very proud to say that, but Pakistan is one of the worst countries in infant mortality. At one time, we ranked like number 4th or 5th, I don't know today what the ranking is. And at the same time, there is a huge number of complications during childbirth, pregnancy, and complications and all that stuff that goes on with it. And so what we did was we have designed a similar kiosk which is equipped with ultrasound and digital stethoscope plus all the other peripherals that we have. And we are taking again the information back to the patient or the pregnant females. We believe that once we give them the information, then they can take care of it themselves. You don't need to supplement them with lots of medications and all that stuff. If you just give them the information, that will solve the problem. But they will have access to the doctor, they will have access to the ultrasound, they will have the digital stethoscope there, and all the other peripherals are out there. I believe that in the next 5 years, that will move the needle significantly in our favor. ग्रेट. अदनान साहब, हमारी जो मेजॉरिटी है अवाम की वो अंग्रेज़ी को शायद ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं करती, तो आई ट्राई कि मैं अपने सवालों को ज़्यादा सिंपल रखूँ, शायद मेरे सवाल से वो कुछ बातों का अंदाज़ा लगा लें. अच्छा, अब ये फरमाइएगा कि जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए क्या टिप्स देंगे आप? वो किस तरह से एक अच्छा स्टार्टअप बिजनेस सेटल कर सकते हैं, या अगर वो आपके प्रोजेक्ट्स में आपके साथ कहीं पे अगर कोई काम करना चाहता है, कोई फ़ायदा उठाना चाहता है, वो किस तरह से कर सकता है? तो आई थिंक स्टार्टअप जो है, so let me see if I can state the word right. तो स्टार्टअप जो है अभी फ़िलहाल फॉर नेक्स्ट 10 to 15 years इज़ द फ्यूचर. इस तरफ जो है ना सारी दुनिया जा रही है. आई हैव माई ओन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसका मैंने जिक्र किया था, द स्टार्टअप काउंसिल. हमारा विजन ये है स्टार्टअप काउंसिल में कि देयर शुड बी अ ज़ीरो एंट्री बैरियर. आपको स्टार्टअप शुरू करने के लिए किसी स्किल सेट की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. दैट्स माई विजन. आप सिर्फ मुझे ये बताइए कि आई हैव आइडेंटिफाइड दिस प्रॉब्लम इन द सोसाइटी, आई वांट टू सॉल्व इट एंड आई एम गोना वर्क हार्ड एंड आई वांट टू लर्न. दैट्स ऑल आई नीड फ्रॉम यू एंड वी वांट टू ब्रिंग यू इन एंड विल हेल्प यू विद दैट. स्टार्टअप की वर्ल्ड जो है, इट्स गुड फॉर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान. इट्स गोना लीपफ्रॉग अस टू द फ्रंट. अभी जो है जैसे उसका हो ना मोबाइल फ़ोन्स का, ये कम्युनिकेशन का हुआ कि पहले लोगों के पास लैंडलाइंस आई, फिर टेलीफोन्स आए, फिर उसके बाद मोबाइल फ़ोन्स आए एंड ऑल दैट स्टफ. अफ्रीका में क्या हुआ? दे डिडंट गो थ्रू ऑल दिस. दे लीपफ्रॉग एंड जस्ट वेंट टू द मोबाइल फ़ोन, द स्मार्टफोन्स राइट अवे, राइट. इसी तरह से हमारे पास स्टार्टअप की वर्ल्ड में ये एडवांटेज है, एक्चुअली अपॉर्चुनिटी है कि वी डोंट गो थ्रू 100 years of progress that the Europe did. We can just leapfrog and go in their front, and in front of them, and then change the world, and just kind of become part of the mainstream. So I think it's a great, huge opportunity for us to take advantage. अच्छा, टेक्नोलॉजी को जिस तरह से आप यूटिलाइज कर रहे हैं, हमारे मुल्क में शायद पहले लोगों में अवेयरनेस की कमी थी, या पहले ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे. आई डोंट नो क्या बैरियर था जिसकी वजह से पहले टेक्नोलॉजी पे इतना जोर नहीं दिया गया, ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से हम टेक्नोलॉजी में थोड़े से बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले में पीछे थे.
अभी आप टेक्नोलॉजी को जिस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इससे आने वाले वक्त में कितना फ़ायदा होने वाला है? फिर टेक्नोलॉजी के आने से क्या मैन पावर मुतासर नहीं होगी, वो इफेक्ट नहीं होगी कि जहाँ पर टेक्नोलॉजी का काम है वहाँ पे मैन पावर का काम ख़त्म हो जाता है? Yeah, actually, somebody asked me this question this afternoon. तो मैंने उनसे कहा कि in 18, so I'm going to answer your second question first, then we'll go back to the first one. 1860 में there was a civil war in USA, 1860-65, right? At that time, 98% of the US population was involved in agriculture. Somehow they were involved with agriculture. Only 2% of the population was doing something else. When this discussion was taking place in 1960, 100 years later, right? 98% of the people were doing something else, only 2% of the people were doing agriculture. So the transformation took place, right? So in transformation, people find other ways to do other things. So I'm not worried about it कि आज जो काम कर रहे हैं वो कल क्या करेंगे. We will find a way. We will find something else to do. ठीक. अच्छा, आपके काम माशाल्लाह बहुत सारे अभी इस वक्त आप कर रहे हैं जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट है. अखुवत के साथ भी आपका कुछ प्रोडक्ट चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा. HAWWA is a great organization. They have been doing a phenomenal work. I mean, they have empowered so many people. I think millions and millions of projects that they have done. On recovery rate, it's about 98% or something. What we have done कि हमारा जो kiosk है, we sell it for 3 लाख रुपए का हम उसको बेचते हैं plus the tax. और उससे they can make a decent living 25-30 हज़ार रुपए की 40 हज़ार रुपए की depending वो आपकी practice क्या है. You can make a living out of that. But the problem is if you go to the bottom of the pyramid, people don't have 3 lakh rupees. Then what do? You either you leave them behind or you do something else. So what we did was we signed a contract with a HAWWA. They came up और उन्होंने अपनी जो बार थी from 50,000 से उसको raise करके 2 लाख पे ले आए. They are willing to fund 2 lakh रुपए and we will work with the operator, somehow finance the rest of it, and we can mobilize people. So that's a huge opportunity. That's a shift in the society that we are thinking about bringing. हमारा vision ये है कि about 50,000 units across the country is going to solve primary healthcare problem. उसमें से plus unemployment problem. Yeah, at least right away 50,000 jobs. That's right off the bat. उसके साथ affiliated जो projects हैं, I believe it's going to be about 150 to 100,000 jobs that we will create in next 5 to 10 years. And what will happen? अभी क्या हो रहा था कि there are few people, like the corporations will buy few units, non-profit organizations going to buy a few units. I'm not undermining non-profit organizations. They're doing a great job, but they can only service 0.1%, 0.2%, maybe 0.5% to 5% people, not the whole country. The bottom इसको हम democratize करके लोगों को empower करें. That's how we will solve the healthcare problem. ठीक. अदनान साहब, इतनी जो हमने देर डिस्कशन की उसमें 3-4 चीज़ें हमने बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कस की हैं. टेक्नोलॉजी से मुतालिक बात की, कियोस्क से मुतालिक बात की, इसके बाद हम एजुकेशन की भी बात कर रहे हैं, अवेयरनेस की भी बात कर रहे हैं. लेकिन इन सब चीज़ों को जब हम अप्लाई करने जाते हैं, इम्प्लीमेंट करने जाते हैं किसी देहात में, दूर दराज इलाके में, वहाँ पर आपको नहीं लगता कि जो इंस्टॉलेशंस होती हैं उनकी मेंटेनेंस भी काफ़ी मुश्किल होती है, फिर लोगों को उसके बारे में एजुकेट करना भी मुश्किल होता है. तो जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पर किस तरह से काम करेंगे? तो एक्चुअली टेक्नोलॉजी का जो एडॉप्शन है ना, दैट टाइम पीरियड इज श्रिंकिंग. जब पहले जहाज़ आए थे ना, इट टुक अबाउट 40 years फॉर पीपल टू एक्सेप्ट दैट यू कैन फ्लाई. जब गाड़ियाँ मोबिलाइज होनी शुरू हुई तो पीपल डिड नॉट अडॉप्ट दैट. इट टुक देम 30-40 years, राइट. जब टेलीविज़न आया, it took them about 20 years to, if you think about this, the time is shrinking. 50 years, 30 years, जब गाड़ियाँ आई तो 20 years. When the television came, it about 15 years. When the mobile phone came, it took 5 years for people to adopt. So the technology is shrinking, the adoption rate is getting shorter and shorter. So the technology की जो है, it's going to happen faster than you can imagine. That's one part of it. Second part is the kiosk hai, on purpose, very deliberately, we are kind of simplifying it.
We are putting lots of technology into it, but we are making sure it's very, very simplified that any Joe can come up, play with this in 5 minutes and they can operate it. So this is happening. So it's not going to be that difficult for people to adopt. अभी जो हम पे क्वेश्चन आता है कि टेली हेल्थ में आप जो हैं, people will say I want the doctor to touch me, but डॉक्टर ने तो हाथ ही नहीं लगाया, राइट? तो मैं पिछले 6 महीने से डाटा देख रहा हूँ जो हमारे पास कस्टम पेशेंट्स आ रहे हैं. आई वॉन्ट वन ऑफ देम टू से कि मुझे डॉक्टर ने हाथ नहीं लगाया. नोबडी इज सेइंग दैट. जिस डेमोग्राफिक के पास हम जा रहे हैं, दोज पीपल आर हैप्पी टू हैव अ डॉक्टर इन 300 रुपीज़. दे डोंट हैव टू सेल देयर कार, राइट? इसका जो एडवांटेज ये है कि आई नो इन स्टेट्स about 1 million people file for bankruptcy each year because of the medical bills. We know that that's a fact. In Pakistan, I just heard about 100 million people go through financial stress because of the medical bills. किसी को गाड़ी बेचनी पड़ रही है, किसी को घर बेचना पड़ रहा है, किसी को जॉब, right? That's a huge stress on 1/3 of the country. And we are going to fix that. और चूँकि हम नीचे वाली demographics से आ रहे हैं, so people are extremely happy to have the service without selling their car. So I think we are on this path with this thing on. ग्रेट अदनान साहब, इस मुल्क के लिए और मुल्क के लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं आप. आपके लिए ढेरों दुआएं. बहुत शुक्रिया आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला. नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ. एक और एपिसोड के साथ आपके साथ मुलाकात होगी. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.